Thank you for this evening. We love you. We are cleansed by the blood of the Lamb. We are accepted in the family of God. We come to your throne of grace, recognizing that we don't have any capacity to understand this word, but you have been gracious to us, and by your Holy Spirit, we are able to receive this amazing word and हवाले करते हैं आपसे अनुग्रह की आशा आपसे हमारी आशाएं हैं। आप हमें भरो, आप हमें सिखाओ, आप हमसे बातें करो। यीशु मसीह के नाम से। We have two new friends here. So let's welcome Frank, okay, and also Sangma ji, okay. स्वागत। न्यू लोगों के लिए we speak this class in English as well as Hindi. We keep mixing it, so don't lose track of it. ये मत सोचिए कि आप मिस कर जाएंगे. Just be patient. You will get what I am speaking. Okay. So now first part आज की क्लास का ये है. We will have a quiz. Okay. For those who have been in the class, for them, for those who are missing, I'm really I miss them, but I can't do anything about them. So वीडियो क्लास के लिए इंस्ट्रक्शन रिमेन्स द सेम जो अभी के लिए है. ओके, दैट एवरीबडी विल टेक आउट अ पेज, एक पन्ना निकाल लीजिए अपने उसमें से, एंड यू विल हैव ओनली 5 मिनट्स. 5 मिनट में आपको ये करना है. यू हैव टू गिव मी वन ग्रीक वर्ड विच यू हैव लर्नड. ओके, एक यूनानी शब्द आपने जो सीखा है अभी तक, कोई भी एक. But then with that Greek word you have to give me the verse where it is there in the Bible. Okay, किस पंक्ति में है वो Greek word, and give me the primary idea behind it, like some description. 3, 4, 5 sentence में 3 to 5 sentence description of that Greek words. Okay, yeah, you can open your Bible, you cannot open your notes. आप अपने notes नहीं खोल सकते, आप अपनी Bible खोल सकते हो. So we have only 5 minutes for this, and video class also has 5 minutes. Pause this video. We are going to pause it right away, and after that, after 5 minutes we will resume. 5 मिनट के बाद हम साथ में करेंगे जो भी करना. So we'll check the question paper right here. Okay, after that 5 minutes. So pause the video. Bablu, pause it. So अभी हम quiz से लौटे हैं. Okay, we have just returned from the quiz. And what we are going to do is, we are going to redistribute these pages. So Lata, in this class, in video class में somebody can do this, redistribute the pages to people. Okay, so किसी के भी पेपर किसी के भी पास जाएंगे. Okay, so you are checking somebody else's paper. So and if somebody gets their own paper, please tell. किसी को खुद का पेपर मिले तो बता दीजिए. And this is how we will check it. Okay. Now, I want one by one people to stand and tell which, like कौन सा Greek word the other person said, right? दूसरे आदमी ने कौन सा Greek word लिखा है और क्या description लिखा है. So we will get to here, and then you give the marks. You give the marks. The checker का रूल ये है, मार्क्स कैन बी ओनली बिटवीन 7 to 10. ओके, मार्क्स जो है 7 से 10 के बीच में हो सकते हैं. सो इट्स योर डिस्क्रिप्शन, हाउ डू यू थिंक द आंसर इज. ओके, सो आई विल लेट यू. अब मैं बताऊंगा कैसे चेक करने का. ओके, एवरीबडी गॉट इट? जिसको नहीं मिला, बी हैप्पी. ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट. सो धर्मेश, stand up, like, or sit, whatever. Tell the answer. What is the answer? No need.
ग्रीक वर्ड है कोइनोनिया, सहभागिता। पहला यूहन्ना 1:3, वह चीज बांटना जो एक समान हो। परमेश्वर का स्वभाव है कि एक जो हम और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आपस में बांटते हैं। यूहन्ना भी वही बात कह रहा है, और शेक्सपियर ओके, जो उसने पुत्र से पाया। So how many remember the word koinonia? कितने लोगों को koinonia शब्द याद है? Okay, wow. What does it mean in English? Sharing something which is in common. Father, Son and Holy Spirit, they share something in common and they share that with us. Okay, that is koinonia. In the Bible it is translated as, English में क्या translation है इसका? Fellowship. And Hindi में सहभागिता. Okay, anybody else wrote koinonia here? So no, अपने पेपर्स देख के बताइए. I am not talking about who wrote. किसके किसके पास पेपर्स हैं जिसमें कोइनोनिया वर्ड है? Okay, you have koinonia. So all koinonia people mark the answer. Okay, give the marks to the person, koinonia person, if they wrote something like this. Okay, if the answer was very similar to what we said, give them 10, and if it was not so similar, then give them 7. Okay, that's the worst it can get. If it is correct, then best it can get is 10. Okay, okay, next word. So koinonia people will not describe the answer now. Okay, koinonia word हो गया. अगला follower and learner. We should not only learn the Christ, but we need to follow him. For that we need to have a relationship. 12 disciples of Jesus were not only learning from him, but they also followed his way. Not only a student, but also a follower. Verses Matthew 28:19. Very good. Let's clap for the person. Who was this person? Okay, wow, that's amazing. मैंथानो, हिंदी में मैंथानो का मतलब शिष्य, राइट? एंड शिष्य का मतलब सिर्फ सीखने वाला नहीं, बल्कि वो सीखने वाला जो पीछे भी चलता है. फॉलो द लर्नर हु फॉलोज. सो हाउ मेनी पीपल हैव द पेपर्स विद मैंथानो? किनके पास मैंथानो पेपर वाला है? ओके, हाँ, ओके, मैंथानो. एनीबडी एल्स मैंथानो? गिव द मार्क्स बेस्ड ऑन द आंसर. आप मार्क्स दे सकते हैं. गिव द पर्सन द मार्क out of 10. Okay, so 7 to 10 mein. And so next, who's so you okay, John 3:16, agape, निशर्त प्रेम जो कोई किसी से नहीं करता, जो परमेश्वर सभी जीवित लोगों से करता है. कोइनोनिया 1 यूहन्ना 1:3. Yeah. One word. So agape, right? Agape, unconditional love. That's agape. Did that person give the verse? What was the verse? John 3:16. So you can, anybody with agape? किसी को agape word मिला है? Okay, agape, right? So you आप मार्क दे सकते हैं agape शब्द के लिए, बिना शर्त का प्रेम. Okay, so you can, huh? Okay, तो गलत आंसर. Let's listen to the wrong answer. agape, unconditional love. First verses है 1 Corinthians 13:1. क्या है? सूखे नेचुरल बॉडी सी रूलर्स. नीचे वाला अलग है, बट ऊपर का सही है ना? हाँ, ये गलत. क्या गलत है उसमें? स्टूडेंट नोज मोर देन द टीचर. ओके, अगापे, बिना शर्त का प्रेम. सो एवरीबडी, अगापे पीपल गेव द मार्क्स. ओके, 7 to 10 का स्केल में आपको मार्क्स देना है. अगापे, ये इफ यू हैव अगापे वाला पेपर, ओके, यू गिव द, सो यू गिव बाय फेथ, मार्क्स दे दीजिए 7 to 10. अदरवाइज गिव टू योर नेबर.
who is the next one? और किसके पास पेपर्स हैं? Who has not come? मेटा schematizo. Yes, transformed. 2 Corinthians 11 verse 12 to 14. Satan changed himself as angel of the light. This word differs from metamorpho. Satan want himself to be to light God, which he can do partially. He can change himself outwardly, but he cannot be like God. मेटा स्कीमेटाइजो, हिंदी में बोलूं इसको, मेटा स्कीमेटिजो, ऊपर से बदलाव, ओके, बाहरी बदलाव। और इन्होंने 2 कोरिंथियन 11 कोट किया कि शैतान अपने आप को परमेश्वर के रोशनी के दूत में बदलना चाहता है एंड बदल नहीं पाता। ओके, सो रैंक दैट पर्सन। एनीबॉडी हैज मेटा स्कीमेटाइजो? ओके, एनीबॉडी एल्स? डॉक्टर, चेकिंग, you are checking your own paper? No. Dharmesh. समझ नहीं आया। यूहन्ना 3:5, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर जो शब्द हैं, और वो ये नहीं कहता कि जल और आत्मा, बल्कि ये ग्रीक में मगर पढ़े तो कहा इवन था कि बाइबल में जल को भी पवित्र आत्मा कहा है। So this person gave John 3:5, okay? John 3:5 में and is translated as even, and that way you interpret that unless someone is born of water and the spirit, that means water means spirit in that verse, okay? Very good answer. So okay, और किसी के पास बचा? Any papers left? Charis, grace we receive which we don't deserve from God, of trust of Jesus Christ we receive one blessing after another, grace for grace, that is John 1:16. Charis. Unmerited favor. बिना योग्यता के पाया गया। Doulos, two words. Doulos, servant. Romans 1:1 and Romans 1:6. Paul introduces himself as a bond servant, and a servant whose who is born in slavery. And दास का doulos हिंदी में, that is पैदा हुआ दास, right? हमेशा के लिए दास. That's what it is. one more word. We are only taking one because we will not get a very poor answer. Okay, so everybody done? Okay, so everybody give the everybody collect the papers, and the class secretary should make a list for me. Okay, who got how many marks? Okay. So so video class knows how to do it. अब आप कलेक्ट कर लीजिए, सबने मार्क्स दे दिए हैं, and send me the this is quiz 2 and this is your you have all passed. Okay, that's a good news. Okay, until everybody starts doing their take home quizzes, I will have to do live quizzes. Okay, let's start. Last week, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे from 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों की किताब से, when Paul says, let's go to that verse again, पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय, 1 Corinthians chapter 2.
What was the verse? Anybody knows? First Corinthians chapter 2 verses 1 to 5. Okay? पहला कुरिन्थियों का 2 1 से 5 पॉल ने कहा मैं तुम्हारे पास आया. Okay, when I came to you, what did I not come with? Excellency of speech, like बोल चाल की उत्तमता से नहीं आया. How did I come? I came not in persuasive words of wisdom. Verse 4, my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom. मेरा वचन और मेरा प्रचार ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी. So Paul did not use the first century philosophic vocabulary. Okay? पॉलुस ने दार्शनिकों की और बुद्धिजीवियों के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया. What did Paul use? Paul used normal day-to-day Greek words. Okay? Words from day-to-day life. रोजमर्रा की जिंदगी में से उसने शब्द यूज किए. Yeah. So last week we did a series of words. Okay? Like series of illustrations from Paul. What kind of words he uses, right? So Paulus किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है. We were in the middle of that lesson. So I will finish that lesson. Okay? इफिसियों के 6 में, Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. इफिसियों का 6 10 से 18. Anybody knows what illustration he uses? Paulus क्या उदाहरण का इस्तेमाल करता है? Warrior, weapons of warfare, लड़ाई के हथियार. So he uses shield, right? ढाल का इस्तेमाल करता है. Helmet, right? Then कमरबंद, what do you call it? Belt, right? And then he uses the shoes, right? जूते. And what does he use? Breastplate, right? Jilam. What else does he use? Sword. So he is using a sword, like picture of a soldier, which a common man knows. सिपाही की तस्वीर. Ephesians chapter 6. Paul is saying, I did not use philosophical speech, like wisdom speech. Greek were into wisdom. Like जो यूनानी लोग थे वो क्या चीज पसंद करते थे? बुद्धिमत्ता. But Paul says I use day-to-day words because who was behind me? मैं रोजमर्रा की जिंदगी के शब्द इस्तेमाल कर रहा था. मेरे पीछे कौन था? What did Paul speak from? Spirit. Power of Spirit was backing him up. पवित्र आत्मा की ताकत उसे बैक. He did not have to have an impressive style of talking. Okay? उसे बहुत प्रभावशाली तरीका बोलचाल का नहीं चाहिए था. उसे क्या चाहिए था? Like रोजमर्रा की जिंदगी से पॉल बोल रहा है and it is effective. Okay? So let's go to some more illustration. Like we are now military illustrations from Paul. Okay? पौलुस के इस्तेमाल किए गए सेना में से कुछ उदाहरण. इफिसियों का 6 1 था. Now 2 Timothy 2 3 and 4. दूसरा तिमोथी का दूसरा अध्याय 3 और 4. What are those verses? 2 Timothy 2 3 and 4. Remember, Paul says, fight a good fight like a soldier. एक सिपाही के. And what does a soldier do? सिपाही क्या करता है? Does not get entangled in the day-to-day affairs. वो रोज की चीजों में फंसता नहीं है. He keeps lightweight. Okay? हल्का फुल्का रहता है. So suffer hardship. Also in verse 9, 9वीं पंक्ति में. Suffer hardship. कैसा? Verses 3 and 4. Suffer hardship. मेरे साथ दुख उठा. कैसे? अच्छे योद्धा के जैसे. Like a good soldier. Then you go to 2 Corinthians 2:14. दूसरा कुरिन्थियों का 2:14. What does he say? He says, God leads us into triumph. परमेश्वर हमें विजय में अगुवाई करता है. You know what is this? What illustration is this? This is the illustration of a triumphant march with a Roman general used to do after a victory. रोमी सेनापति जब युद्ध में जाता था और विजय प्राप्त करके लौटता था तो
तो एक प्रोसेशन निकालता था, जुलूस, in those days, and everybody knows it because it was right on the streets of the city. He leads us into triumph. That does not mean, remember this, he leads us into triumph does not mean that he leads us into fight. वो हमें विजय में अगुवाई करता है, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर मुझे पहले युद्ध में ले जाएगा फिर विजय प्राप्त करेगा. That triumphant march, जो विजय की का जुलूस था, वो तब होता था when victory is already won. विजय ऑलरेडी हो चुकी होती थी, and then it was just a parade, victory parade, विजय का जुलूस. Okay, 2 Corinthians 2:14. What has Christ done? Christ has already won the victory. यीशु मसीह ने विजय प्राप्त कर ली है, और अब वो हमें कहां अगुवाई कर रहा है? Is leading us from that victory. We are in a victory parade. एक विश्वासी के तौर पे हम कहां हैं? हम विजय के जुलूस में हैं. किसमें? विजय के जुलूस, विक्ट्री परेड. देन कोलोसियंस 2:15, कुलूसियों का 2:15, अगेन अनदर मिलिट्री इलस्ट्रेशन. ओके, ये सेना का उदाहरण है. क्या बोलता है? ही what he did, principalities and powers, what he did, he made an open spectacle and he disarmed them. बाइबल कहता है उसने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, एंड उनको क्या कर दिया? What do you do when in military and one person is surrendering, one army is surrendering, एक सेना क्या कर रही है? आत्मसमर्पण कर रही है. फर्स्ट थिंग द विक्टर विल डू, विजयी पार्टी पहले क्या करेगी? रिमूव देयर वेपन्स, राइट, टेक देयर वेपन्स अवे, डिसआर्म देम, राइट. व्हाट डिड यू so what did Jesus do on the cross? He disarmed whom? Principalities and power. उसने क्या किया? दुष्टात्माओं और शैतान की ताकतों को क्या किया? उसने उनका हथियार हटा दिया. Satan does not have a sting anymore. शैतान के पास, by the way, real हथियार. He doesn't have any real weapon. What was the real weapon of Satan? शैतान का असली हथियार क्या था? Yes, that's good. Moth is like death is the final weapon. You remember 1 Corinthians 15 when Paul cries out, "Oh death, where is your victory? Where is your sting?" Right? तेरी डंक कहाँ है और तेरी विजय कहाँ है? So there is no, Satan doesn't have a final weapon. He can deceive you. वो आपको धोखा दे सकता है. But can he use death against you? क्या वो मौत को, like what if Satan could send death on somebody? इस शैतान किसी को मार सकता? Will the believer lose if he dies? क्या विश्वासी हारेगा यदि वो मरेगा? No, death is a victory for a believer. मौत जो है एक विश्वासी के लिए क्या है? विजय है. So this is another one, another 2 Corinthians 10:4 and 5. दूसरा कुरिन्थियों का 10, 4 और 5. If you know the verses. What is it? The weapons of our warfare are not carnal. हमारी लड़ाई के हथियार दैहिक नहीं है. कैसे हैं? They are spiritual. वे आत्मिक हैं. And then what does it say? For bringing down the strongholds, tearing down the strong. What are the strongholds? किलों को ध्वस्त करते हैं. You know what is strongholds? किले. These are forts. In olden days, when two kings would fight, right? Like दो राजा लड़ाई लड़ रहे हैं, so where is the place of refuge? बचने की जगह कहाँ होती है? Fort, किला है. If you have a very strong fort, it is very difficult to defeat it. यदि किला बहुत मजबूत है तो उसको you will have to destroy the fort in order to win the victory over the city. आपको उस किले को ध्वस्त कर. Remember Jericho? Jericho? What happened? Wall has to be destroyed to get into Jericho. यरीहो में घुसने के लिए क्या करना पड़ेगा? So weapons of our warfare are spiritual. हमारी लड़ाई के हथियार कैसे हैं? आत्मिक हैं. और वो क्या करते हैं? They bring down the strongholds. वो किलों को, दीवारों को तोड़ते हैं. Satan has strongholds here in this world, and the weapons of our warfare, what do they do? हमारी लड़ाई का हथियार क्या करते हैं? किलों को ध्वस्त करते हैं. They destroy the walls. Okay, so
So these are military illustrations of Paul. Okay, पौलुस के द्वारा सेना से संबंधित इस्तेमाल किए गए उदाहरण. Now let's go to government, सरकार से संबंधित उदाहरण. Paul used some examples from the government. Philippians 1:27 and Philippians 3:20. फिलिपियों का 1:27 and फिलिपियों का 3:20. What is that? Let your conversation be from heaven. तुम्हारा वार्तालाप कहां से हो? स्वर्ग से हो. What is the illustration here? It's embassy. Embassy. Now, by the way, Philippian was a Roman colony. जो फिलिपी शहर था, that वो क्या था? रोमी कॉलोनी था, रोमी शहर था. It was right in the middle of Macedonia. मकदूनिया के प्रांत में था, but it was not like a Macedonian city. वो मकदूनिया का शहर नहीं था, वो रोमन शहर था. रोमी नागरिक लोग रहते थे वहां. Roman guards and Roman army used to live in that city. So when Paul is writing to these people, पौलुस इन लोगों को लिख रहा है जो रोमी लोग थे नागरिकता से. It's like this. When let's say in India, like in Bombay, there is an American embassy. एक अमेरिका की embassy है. Now American embassy, if you go into an American embassy, it operates like America, even though when it is in India. वो भारत में होते हुए भी किस सरकार के नीचे चल रही है? It is under the government of America. So same way believer is. विश्वासी भी उसी तरीके का. We are in this world. हम इस दुनिया में हैं, लेकिन हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं. We are not citizens of this. Like we are strangers and pilgrims. हम क्या हैं? हम विदेशी हैं, हम यात्री हैं. And Paul उसको as a उदाहरण इस्तेमाल करता है. Paul is using that as an illustration. Paul says, let your conversation, let your तुम्हारा क्रियाकलाप, तुम्हारा बोलचाल, let it be how? As if like from heaven, because your citizenship is in heaven. आप स्वर्ग के लोग हो, आप यहाँ रह रहे हो. So don't be like this. You are not from here. So American embassy, the person will not start operating like an Indian. He is not under Indian government. वो भारत की सरकार के नीचे नहीं है. वो किस सरकार के नीचे है? He is under American. So same way we are not under. So Philippians 1:27 and 3:20. Okay, that was. Now next one is from sports. Paul's illustration from sports. खेल कूद के, Paul के खेल कूद से संबंधित उदाहरण. Amazing. Normal life, and we could go to study the words and illustrations used by Jesus. हम यीशु मसीह द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों और उदाहरणों को हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. You will find similar from real day-to-day life. Okay, रोजमर्रा की जिंदगी से. The next one is from games. By the way, Greek culture was full with games, sports and games. Okay, खेल कूद यूनानी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा था. Do you know who started Olympic Games? Athens. It started from Athens. Okay, Olympia, like stadia word. The word Greek word is stadia. Stadia word यूनानी word है, जिससे कि आज स्टेडियम, we say stadium, right? जहाँ खेल कूद होता है, वो यूनानी भाषा के स्टेडिया वर्ड से आया था. स्टेडिया word means a certain size of the field. I have 606.75 feet. 606 मतलब पौने 607. Okay, 606 and then 3/4. Okay, 3/4. ये साइज का फील्ड होता था in those days in their games, and that size used to be called stadia. उस साइज का वो ग्रीक में that size was stadia, and from stadia came stadium. Okay, so today's stadium is based on Greek sports. Okay, dimensions may have changed, field का size बदल गया है, but you still call them stadium. साइज बदल गया फील्ड का, लेकिन आप उनको स्टेडियम बोलते हो. क्यों? ग्रीक वर स्पोर्ट्स लविंग पीपल. वो खेल कूद पसंद करते थे. कोलेजियम्स, राइट, कहाँ पे थे? लाइक ग्रीक कल्चर, रोमन एंड ग्रीक. सो नाउ
let's see Paul, some examples of Paul from Greek athletics. Second Timothy, yeah, we'll go. Now you will notice 3 books, 3 किताबें हैं जिसमें Paul sports के example बहुत ज़्यादा use करता है. He uses a lot of sports examples. These are the 3 books. There is a reason to it. Corinth, Philippians and Timothy. Okay, कुरिन्थियों की किताब, फिलिपियों की किताब, तिमोथी. Why? Corinth and Philippi were 2 sports center under Greek. Okay, Corinth and Philippi were 2 major sports center, खेल कूद की जगह थी. And Timothy had a Greek background. Timothy's father was Greek. Timothy का पिता यूनानी था. So now let's go. 1 Corinthians 9:24 to 27. पहला कुरिन्थियों का 9:24 से 27. You remember what Paul said? पहला कुरिन्थियों का 9:24 से 27. Anybody knows? I run to win. I run for the prize. मैं इनाम के लिए दौड़ता हूं, पॉल बोलता है. Now I'm just summarizing the verse. We are going into this verse very soon. जब हम ये study a castaway, we will study that word. That time we will go there. So Paul says, I run to win. And मैं हवा में मुक्के नहीं चलाता. I don't beat the air. What is that picture of? That's a picture of boxing. Now you know what is the biggest problem a boxer can go through? Like boxers don't get defeated when they fall down. If like punch is wasted. Wasted punch is very serious in boxing. यदि आप punch मार रहे हो और and the opponent defends himself, right? जो आपका दुश्मन है वो अपने आप को बचा लेता है और आपका पंच एयर में जाता है, हाँ? एनर्जी वेस्ट होता है, right? So same way, so Paul says, I do not beat the air. 1 Corinthians 9:24 to 27. मैं हवा में मुक्के नहीं चलाता. What does that mean? He is using a sports example. Corinthian people understand very well. कुरिन्थ के लोगों को अच्छे से पता है, हाँ, कि हवा में मुक्के चलाने का क्या मतलब है. You are gone. You are losing energy. आप अपनी ताकत खो रहे हो. So that one. Then 1 Corinthians 7:9. This is a good one. Let's open. पहला कुरिन्थियों का 7:9. 1 Corinthians 7:9. What does it say? Somebody read it. Yes. If they do not contain, if they do not have self-control, यदि वे संयम ना कर सकें, the word temperate there, like the संयम, you know, that is the word from a sports context. Now, in the Greek culture, यूनानी सभ्यता में एक sportsman, you know, what was the first games? Let me give you the name. First games there, Isthmian games. Corinth का, now if you know Corinth, if you have seen the map, Corinth का नक्शा यदि आपने देखा हो, Corinth is, this mainland is there. This is actually Corinth. It was a port city. Okay, यहाँ से ships गुजरते थे. Okay, this place was, यदि आप मैप देखेंगे, this was Cenchrea. Book of Acts में आपको ये दोनों words मिलते हैं. Now this is the place where Paul got his hair cut. Right? Paul ने बाल कटाए थे. Now Cenchrea and Corinth were part of the same city. दोनों एक ही शहर का हिस्से थे. Now so English में such a land spot is called isthmus. If a piece of land जिसके बीच में से समुद्र होकर गुजरता है and long land, इस चीज को isthmus बोलते हैं. Now Corinth में there used to be a games even before Olympics began in Athens. Athens में Olympics शुरू होने से पहले Corinth में एक खेल होता था जिसका नाम था Isthmian game. Isthmian games. Now there was a rule in Isthmian games. एक नियम था. To qualify, you know, today in participating in Olympics you have to qualify.
ओलंपिक्स में यदि आपको, nobody can say okay, and like India wants to send let's say the soccer team, okay, भारत की इंडियन सॉकर टीम डजंट इवन क्वालिफाई, फॉरगेट अबाउट प्लेइंग इन ओलंपिक्स, ओलंपिक में खेलने की बात ही छोड़ दीजिए, आप क्वालिफाई भी नहीं करते हो, राइट? सो देयर वाज, नाउ दैट इज टुडे, देयर वाज इन इस्थमियन गेम्स देयर वाज अ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? योग्यता। योग्यता। इस्थमियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने, हिस्सा लेने के लिए एक योग्यता थी। यू नो योग्यता क्या थी? 10 months of severe discipline, temperate, संयम। 10 महीने तक आपको एज अ स्पोर्ट्समैन आपको क्या करना था? You had to discipline your life. Now there was rules given. 10 months तक you have to be on the practice every day. आपको व्यायाम के लिए जाना है। You have to be in the gymnasium. आपको you have to take a proper diet, जो उनकी given diets थी वो लेना है। Now this is how a participant had to live. जो खिलाड़ी था उसको 10 महीने तक का ये प्रोग्राम है, he has to follow it. Suppose he does not follow it. खिलाड़ी बोलता मैं बाद में रेस में जीत लूंगा somehow, but I am not willing to follow this 10 months schedule. He is out. He is disqualified. Now read 1 Corinthians 9. Those verses. Yeah, so that's self-control. Now I'm going back to 1 Corinthians 9, 24 to 27. पहला कुरिन्थियों का 9, 24 से 34. Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। Run in such a way that you may win, right? Now listen to further. Everyone who competes in the game exercises self-control in all things. और हर पहलवान जब सब प्रकार का संयम करता है, so पहलवान, now suddenly in Hindi translation it goes haywire, but basically बोल रहा है जो खिलाड़ी होता है उसको सब प्रकार का क्या करना पड़ता है? सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। He has to exercise self control. What is Paul referring to? Paul is referring to this temperation, 10 months of temperate period, 10 महीने का अनुशासित रहने का समय। Then listen to this what he says. Then he says, they then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. They, who are they? These sportsmen. He is talking about an existing practice. क्या बोल रहा है? वे जो ऐसा करते हैं वे तो नष्ट होने वाले मुकुट के लिए करते हैं, पर हम नष्ट होने वाले के लिए नहीं करते। Paul is comparing this temperate period, संयम को क्या तुलना कर रहा है? इन खिलाड़ियों से। They do it. It was a known fact. People like today an Olympic player who is representing India in next Olympics in shooting. Some of you may know or who is representing India in weightlifting next Olympics. You know them, right? How they are living? वो कैसे जी रहे हैं? Same way, Paul is saying, guys, Isthmian Games में जो जाता है, the guys who want the gold medal, this is how they live. 10 months of strict discipline, right? They do it for, वो किसके लिए कर रहे हैं? Perishable crown, नष्ट होने वाले मुकुट के लिए. But we do it for what? Imperishable crown, like the crown which will never be destroyed. वो मुकुट जो कभी नष्ट नहीं होगा. And then listen, आगे क्या बोलता है? Therefore I run in such a way as not without aim, I box in such a way as not beating the air. इसलिए तो मैं इस रीति से दौड़ता हूं कि बेठिकाने नहीं, और इस रीति से मुक्के से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है. I'm not wasting my punch. I'm not wasting my, like when I fight, and I'm on target. मैं जब दौड़ रहा हूं तो मैं बिल्कुल बराबर ट्रैक पे दौड़ रहा हूं. You know, in even today's Olympics, if your feet once touches the outside your lane, you are disqualified. 100 meter you may do it in 6.5 seconds. But if your one step fell on the
ट्रैक बिसाइड यू, राइट, एक आपका पांव एक कदम बाजू वाले ट्रैक में गिरा, यू आर डिस्क्वालिफाइड, राइट, you have to be on your track. That's what he's saying. I do not run without direction. मैं अपने ट्रैक में दौड़ रहा हूं, right? And then listen to 27, 27वीं, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. इंग्लिश में, but I discipline my body and make it my slave so that after I have preached to others I myself will not be disqualified. Now some verses, is there any other version in the Bible? Cast away. This we are going to talk about today. Cast. Some people say, oh my God, Paul is saying, I am therefore careful that after preaching to everybody, I should not be a castaway. Castaway word बड़ा strong word लगता है. Castaway means as if thrown out, right? So lot of people make wrong doctrine. So हिंदी में कई लोग कहेंगे, वाह, पॉल कह रहा है कि सबको प्रचार करने के बाद यदि मैं निकम्मा ठहरा तो कहीं ऐसा ना हो मैं ना फेंक दिया जाऊं. Paul is not afraid of losing his salvation, by the way. You have to understand what is he talking about in the given illustration. If the person who is aiming to run for the Isthmian games, जो आदमी इस्थमियन खेल की तैयारी कर रहा है और उसमें दौड़ना चाहता है, he has a 10-month goal of living a disciplined life, right? उसको 10 महीने का वो दिया गया है नियम कि कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे तैयारी करना है. Suppose he does not, he goes and lives anyway. वो कैसी भी जाके जिंदगी जीता है और रोज समोसा खाता है, जैसे आपने क्लास के पहले खाया. If he eats samosas every, I'm just joking. I'm not eating now. Now I can say that. इन्होंने नहीं खाया. ये he crown लाऊं आपके लिए? Okay, but Paul is saying, like what happens to that man is disqualified. That's a good translation. Disqualified. What does disqualified मतलब? Like you are not allowed to participate in the game. Therefore no prize. You are not in the race. आप उस दौड़ से बाहर हो जाते हो, ना कि आप सजा के हकदार हो जाते हो. He is not talking about receiving a punishment. He is talking about being out of the race. Okay, so it's not, that verse is not talking about losing salvation. That's talking about losing your rewards. Okay, आप लड़ाई में दौड़े नहीं तो मुकुट नहीं है, no gold medal. Okay, so Paul is saying that. Okay, but good illustration. Like in this portion of the class, we are not even talking doctrinal for this moment. Okay, हम उपदेश की भी बात नहीं कर रहे हैं. We are saying, see how life illustrations, Paul's illustrations are. He's not talking theology और बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है, from real life, and that is why it makes sense to understand Paul कह क्या रहा है. Bring it in context. उसको प्रसंग के साथ समझें कि पॉल क्या कह रहा है. Okay, any other games illustrations? Because you don't see, you are going for gold medal. Okay, now you did not even get to participate in the race. Where is the gold medal? Yeah, but okay, in the bigger context it will be called that you lost your rewards. It's not like, see, one way of losing reward is I got the reward and lost it, but the other way is I did not even get it. Come on, I did not even get to run. Right? मुझे दौड़ने ही नहीं मिला तो इनाम कहाँ से मिलेगा? तो इनाम खो गया. Right? So in theology, in terms of Christian context, मसीही जीवन के हिसाब से यदि हम बातें करें, we will say this man, suppose who is this, like there can be a Christian like this. Okay, कोई मसीही ऐसा हो सकता है. He is running well, he is going for it, he is disciplining, like he is like वो आत्मिक अनुशासन में जी रहा है. Right? He is following after the Lord, प्रभु के पीछे जा रहा है. And then he gets attracted, किसी चीज से आकर्षित हो जाता है. And then he starts going haywire. Right? And he is no more temperate. He is no more preparing for the race. वो उस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए तैयारी नहीं कर रहा है. What happens to him? Lord loves him. यीशु मसीह उससे प्रेम करता है. But what does he get deprived of? He doesn't run the race. Okay? हम इसके बारे में we'll talk a little more
when we go to this part. Okay, so what else? Yeah, he should run according to the rules also. Yeah. 2 Timothy, which is the verse? 2 Timothy 2. Yeah, I agree. Like the one who runs should run according to the rules. Usko niyam se दौड़ना है. नियम से दौड़ना है. That's what we were talking about. Ki, okay. Like even 1 Corinthians 9:24 to 2 Timothy 2:5, 2 Timothy 2:5, right? Let's read that verse also. 2 Timothy 2:5, 2 Timothy 2. फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता. Like who sets the rules? The athlete cannot set the rules. दौड़ने वाला स्वयं नहीं होगा. Oh, I don't feel like doing this and I feel like doing this. According to me, this is better. मेरे हिसाब से ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है और मुझे ऐसा करना मुझे. Like who gave you the authority? Right? Like here is the race and here is the rules. Like for us, our life is the race. जिंदगी हमारी दौड़ है. And here is the bylaws of the, right? And Holy Spirit gives us also Pavitra Atma. Now Philippians 3:13 and 14. फिलिपियों का 3, 13 और 14. Another race illustration. Paul, what does Paul say? Anybody who knows this verse? फिलिपियों का 3. No, that is 2 Timothy. I run for the prize of the high calling. Right? Remember? Anybody wants to read that? Wow. I press on. That's the word there. Press on. I press on. हिंदी में क्या है? मैं एक काम करता हूं. One thing I do. जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं. Forgetting the things which are behind, right? Then I go press on forward. Now this word press on has a meaning. Okay, मैं आगे को बढ़ता हूं. Like there are two things connected with that. One thing is forgetting the things which are behind. पीछे की बातों को भूलना. And then like press on word, like if you wanted to draw it in a picture, Greek language में the word press on picture will be like this. Like just going for it. I'm all bent over. मैं पूरी तरीके से झुका हुआ हूं. Like almost like tilting and falling. इस तरीके से press on. Like I press on. Like मेरा पूरा एनर्जी with all my पूरी की पूरी ताकत किधर को है? Like lot of people, Christian life, you know how they live? Half tilted towards back. पीछे को ज्यादा झुके होते हैं. Like in their past, पुरानी बीती बातों में, right? And a runner, एक जो दौड़ने वाला होता है, Olympic runner. You know what is this? Is again क्या है? Sports picture. Runner cannot afford to concentrate on the guy who is behind him. जो दौड़ने वाला होता है, उसका ध्यान वो पीछे वाले पे नहीं होना चाहिए. The moment he concentrates on him, he loses the step. Right? What he has to be looking at? The finish. Right? आखरी. Like that's the picture here. Paul कहता है, this is how I live my Christian life. I press on. आगे को बढ़ाओ. Forgetting the thing. One thing I do. एक चीज मैं करता हूं. क्या? पीछे बीती हुई बातों को भूल के. Right? So, and then he also says this. Verse 14. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं. Right? निशाने की ओर. What does that mean? Press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है. High calling. Prize of the high calling. There is a, like the gold medal. Right? वो मुझे दिख रहा है. It's right beyond the finish line. वो आखिरी वाली लाइन के उस पार है. Right? That's the picture. वो तस्वीर है.
I don't know, Ravi Jakras shares this, and maybe आप में से कईयों ने सुना होगा, of the story of a runner. He was running Olympics, real Olympics race, and he had timed his race. उसने अपना practice वगैरह में पूरा timing निकाला था. He was all set to win the race. Okay, वो बिल्कुल उसकी सब तैयारी पूरी तरीके से पूरी थी रेस दौड़ने के लिए. And you know what happened when the bullet was fired, वो like आवाज करते हैं, like बंदूक चलाते हैं, and he started and he says for one moment, एक क्षण के लिए उसके दिमाग में ये ख्याल आया. He had a very negative father. उसका पिता जो था बहुत नेगेटिव था, उसको हमेशा डांटता रहता था, you are no good, तू अच्छा नहीं है, and all that. And then during the race, just for a second he remembered what his father used to say to him. उसका पिता उससे क्या बोलता था. And he lost the race. He lost the race. उसने वो रेस हार गया. So I mean, what I'm saying is, Christian life is not to be lived like that. मसीही जीवन उस तरीके से जीने के लिए नहीं है. Looking ahead, looking forward, looking unto Jesus. Hebrews 12, 1 and 2. इब्रानियों का 12, 1 और 2. Even though we don't know whether this is Hebrews, the author is Paul or not. Okay, इब्रानियों का लेखक पॉल है कि नहीं हमें नहीं पता. Kenneth Wuest seems to believe that it is Paul. But there also Hebrews 12, 1 and 2 में again वही उदाहरण है. क्या बोलता है? How does it say? Therefore, seeing such a cloud of witness which surrounds us. गवाहों का वो बादल जो हमें घेरे हुए. Do you get the picture? What is the picture? It's a picture of a stadium. What do you have in the stadium? Who is surrounding you? एक स्पोर्ट्समैन को स्पेक्टेटर्स. तो गवाहों का एक बादल. इन दिस वर्स हु आर द क्लाउड ऑफ विटनेसेस? कौन है गवाहों का बादल? एनीबडी नोज? हिब्रूज 12:1 में हु आर द क्लाउड ऑफ विटनेस? हिब्रूज 11 फेथ हीरोज. हिब्रूज 11 में विश्वास के हीरोज हैं, राइट? बाय फेथ अब्राहम, बाय फेथ सारा, बाय फेथ गिडियन. विश्वास से हाबिल, विश्वास से शिमशोन, विश्वास से मूसा, राइट? ये सारे कौन है? फेथ हीरोज. एंड ही सेज टाइम विल, लाइक बुक्स विल बी फिल्ड इफ आई राइट एवरी नेम. देयर आर सो मेनी ऑफ देम, राइट? इतने सारे गवाहों के बादल हैं. एंड देन ही सेज देयरफॉर सिंस वी आर सराउंडेड, क्योंकि हम घेरे गए हैं with such a cloud of witness, let us run the race with patience. इसलिए इस दौड़ को कैसे दौड़ें? धीरज से दौड़ें, राइट? Yeah, that's a good verse. Like हल में हाथ रख के पीछे, like not like putting your hand on the plow and not looking back, right? So then he says, Hebrews 12:2 में, looking unto Jesus. Looking, यीशु मसीह की ओर देखो. How do you run your race? Looking unto Jesus, looking at the finish line, looking at the crown. इनाम की ओर नजर रखे, यीशु मसीह की ओर नजर रखे. And you know that word looking in the Greek language, यूनानी भाषा में देखते हुए शब्द is like looking away to Jesus. That's how that word translates. यदि आप उस शब्द को ग्रीक में ऐसे ट्रांसलेट करें, यीशु की ओर दूर देखते हुए. That means you are looking, when you are looking at Jesus, looking unto Jesus means यीशु की ओर देखने का मतलब यह है looking away from something, किसी चीज से दूर देखना. So it's not just looking at Jesus, it's also looking away from something. If Jesus is here, then I cannot be looking there as well as there, right? यदि यीशु उधर है तो मैं उधर भी और इधर भी नहीं देखते रह सकता. You remember Peter, Matthew 14, पतरस मत्ती 14 में, you can either look at the disciples who are in the boat or at the water or look at Jesus. आप या तो लहरों की ओर देख सकते हो, या चेले जो आप पीछे हल्ला कर रहे हैं बोट में बैठ के उनकी ओर देख सकते हो, या यीशु मसीह. Until Peter was looking at Jesus, जब तक पतरस यीशु को देख रहा था तब तक he is walking on water, वो पानी पे चल रहा है. मोमेंट पतरस का ध्यान लहरों पे गया, oops, gone, right? डूब गए. So anyway, let's move further. So
Wow. So these were the sports examples. One more. Yeah, second Timothy 4, दूसरा तिमोथी का 4. I have fought my fight, I have finished the course. I have fought a good fight and I have finished the course. मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है and मैंने अपनी दौड़ पूरी की है. Right? 2 Timothy 4, that is. A crown awaits me. Like, yeah, the same example. एक मुकुट मेरा इंतजार कर रहा है. When you finish the race, you are expecting a medal, right? आप medal की आशा कर रहे हो. Okay. So 2 Timothy 4, 7 and 8. No. Okay, 1 Timothy 4, 7 and 8 also there is something. 2 Timothy 4, 8. दूसरा तिमोथी 4, 8. Okay, then go to next one. Again, sports है big deal. Yes. Have you in the Olympic events relay race जानते सब लोग? In Christian life there is also a relay race. मसीही जीवन में एक रिले रेस भी है. Where is that relay race? Philippians 1:27. फिलिपियों का 1:27. स्ट्राइविंग साइड बाय साइड, स्ट्राइविंग टुगेदर, दैट फ्रेज हिंदी में मैं बोलता हूं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते. एक चित्त होकर, स्ट्राइविंग साइड बाय साइड. So there is some parts in our race as a Christian where we are running together, right? हम क्या कर रहे हैं? साथ में दौड़ रहे हैं. मसीही जीवन में एक हिस्सा है जहां you have to have somebody else. Nobody can win a relay race alone, right? एक relay race है जो कभी भी अकेले नहीं जीतता. And that's what Paul is thinking about. There are some games where you have to do together, right? Maybe cricket को बोलते हैं लोग कि it is sometimes man show वाला game, हाँ, like but most of the sport is teamwork. इकट्ठा जीतना. If you win together. तो साथ में जीते. And Christian life is like that, right? So that's another one. In Romans 15:30 again you have the same word. रोमियो का 15:30. Okay, same word. I'm not going there. Okay, let's do that. Romans 15:30. रोमियो का 15:30. अतः हे भाइयों, यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर. It's not just you pray for me. It's like let us strive together in prayers, right? Now I urge you, brethren, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in prayers. Strive, like Paul is inviting them in their team. We have to win this game together. ये खेल हमको कैसे जीतना है? Fighting it together, fighting it out together, साथ में मिलकर. Word agony. English word agony and like the Greek word sounds similar. Okay, Unani shabd bhi agony. Now, like agonizing, like really giving it all, पूरी ताकत लगा देना. So, wow. So this is some of the things. Now, very briefly, we will go to this word a castaway. Okay. No, अभी तो I have not.
Okay, let's quickly finish castaway, because castaway is very simple. 1 Corinthians 9:27. I have almost explained you everything in that, right? Castaway. Now you have to notice this thing. John 6:37. John 6:37. What does it say? Him that comes unto me, I will in no wise cast out. तो यीशु मसीह कहता है जो मेरे पास आएगा उसको मैं कभी भी निकाल के फेंकूंगा नहीं. ओके, so idea is very clear. No, he's talking about you and me. He's talking about you and me. Jesus is saying that when we have come to him, he is not going to throw us out. हम यीशु मसीह के पास आए हैं, यूहन्ना 6:37, राइट, एंड यीशु मसीह कभी भी हमें फेंकेगा नहीं. Do you believe that? He cannot. He has made a promise. He is not going to cast us out. He is not going to cast us out, right? So then what is Paul? Does Paul know this? Paul उसको ये पता है? He cannot be cast out. When 1 Corinthians 9:27, पहला कुरिन्थियों 9:27 में जब वो ये कहता है so that I should not be a castaway, is not meaning cast out. Now Greek language में this cast out word is ekbalo exo. Just for you, ek means, ek is a very common word, out of. Exo, ek means out of, in the Greek language. Ekbalo exo. Now just cast out. This is cast out, निकाल फेंकना, John 6:37 में. By the way, cast away, 1 Corinthians 9:27. You would like to compare these two. आप इन दोनों की तुलना करना चाहेंगे, right? This word is adokimos. Very soon I am going to explain you what does this adokimos means. Okay? ये जो शब्द है cast away is totally different word than this. जब John 6:37 में Jesus is making a promise, he will not be cast out, and this is the word used, and this word is not at all even related with this word cast away. Okay? A little bit more and then I will go to that. Okay? I have given you almost the whole answer. 1 Corinthians 9:27. What does castaway mean? Disqualified. But like if you can't remember anything else in your Bible, you should with your pencil write some in the bracket in front of 1 Corinthians 9:27 castaway. You should write disqualified. Ayogya. Okay? Ayogya. Yes. So I'm going to that. Two kinds of testing. That's the lesson. This of that word, documos. So disqualified. यहाँ पे castaway is what? Said that I should not be disqualified. मैं अयोग्य न ठहरूं. Now that disqualified can mean many things. Somebody may say disqualified to go to heaven. But what is the context? स्वर्ग के लिए अयोग्य बोला जा रहा है या किसके लिए अयोग्य? रेस के लिए अयोग्य. Disqualified from the race, disqualified from the prize, right? इनाम से के लिए अयोग्य. Okay? It's not the disqualification from eternal destiny. Okay? Because if that was the meaning used, then cast out would be the term. Okay? Ekbalo exo, John 6:37. Which Jesus promised, will come to me, will not be cast out. Right?
दो तरीके के. This is an amazing lesson. Anyway, now why are we studying Greek? What is the... Okay, anybody else? Why are we studying Greek? Why is this course important at all? Why can't we read our Bible only in English and survive? Okay, great. ग्रीक भी चेंज होता है. Yes, hermeneutics is important. Yes. Yes, yes, you all are right. But I am wanting a answer which hits the bullseye. Why do you want to know the root word? A lot of occasions you find a word used in English, okay, which was originally a different word in Greek. Two different words in Greek, when they are translated as same word in English, then there is no way in reading English to know what did the author mean. हिंदी में भी बोलता हूँ मैं, जब यूनानी भाषा के दो अलग अलग शब्द इंग्लिश में या हिंदी में सेम शब्द में ट्रांसलेट होते हैं, तब ये पता लगाना बहुत असंभव है कि ऑथर क्या कह रहा था. ओके, फॉर एग्जांपल प्रेम, लव. देयर आर 4 वर्ड्स इन फॉर लव इन ग्रीक लैंग्वेज. ओके, टेल मी. अगापे, that was 4th. Let's start with storge. Okay, parental love. That's how do you begin in life? Which love you experience first? Storge. Okay, parental love. Then what is the second one? Filio. Filio means brotherly love, friendly love, भाई का चारे का प्राण. What is the third one? Eros love, romantic love, right? Physical expression of love, emotional. Fourth one is agape, right? you have experienced it now when you came to Christ, right? यीशु मसीह में आए तो agape, God's unconditional love. Now if you knew only the word, पूरी बाइबल में आपने सर्च किया and all you knew is love, 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 you would not know. If you know behind it, it will make a lot of sense. Now I'll give you some verses to read. I would not say internal meaning as intended. Yeah, that's right. Intended meaning. You're all right. How do you want from Greek, like Unani bhasha? Okay, let's do one thing. I will ask you to read some verses. Okay. It would be Hebrew, right? Because Old Testament was written in Hebrew and New Testament is written in Greek. But I don't exactly know which word you are talking about. Psalm 84 verse 6. And what is the verse? Valley of Baca is a Hebrew word. Yeah, Valley of Baca. So that's a Hebrew word, okay? So when you read New Testament, you refer to Greek words because New Testament was written in Greek. But when you read Old Testament, often you study Greek words. Unless there is a Greek version of Old Testament which the Jews translated about 200 BC, and that's written in Greek. So anyway, so let's and then make some sense. Why are we studying this talk? Okay, so let me use instead of verses. Hebrews 3:9, इब्रानियों का 3:9. Anybody knows the verse? When your fathers put me to test and saw my works for 40 years. Okay, तुम्हारे पिताओं ने मेरी परीक्षा ली, आज तक पढ़ा, 40 साल तक मैं कर. Who is talking this?
Okay, Holy Spirit, of course. Are you sure? Father, God the Father is talking this verse. But anyway, like for the time being, let's say God, what is he saying? Israel's fathers tested him. How can you test God? Okay, I'm just posing that question. इज़राइल के लोगों ने, प्राचीनों ने परमेश्वर की परीक्षा की, जांचा, परखा. Okay, now let's go to another one. James chapter 1. याकूब का पहला अध्याय. Verse 3. हिंदी में. Okay. Now verse 12 in James 1. Okay. In English में. Blessed is the man who endures in the temptation. Who is testing him? Satan wants to bless us? Huh? Okay, now verse 13. Read verse 13. जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है. Now let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anybody. But Hebrews 3:9 says, your fathers tested me. But this verse says God cannot be tested. इब्रानियों का 3:9 कहते तुम्हारे पिताओं ने मेरी परीक्षा ली थी, but ये पंक्ति बोलती है, and the translator is trying to use tempted and tested without making any sense of it. Okay, so I will give you two words. मैं आपको दो शब्द देता हूं to help you understand what is these verses saying. Greek language में एक word है dokimos. Get familiar with this, very good word. Okay, dokimos. It can be translated as tested, test, or pariksha, dokimos. Okay. Now the other word which we will, now dokimos can sometimes be dokimozo. It's acceptable in Greek. Noun and verb का फर्क है. But second word, peirazo. नहीं, sorry, peirazo. Peirazo. Now this word can also be translated either as tested or tempted or temptation. Okay? Peirazo, परीक्षा लेना or whatever. Now I will give you the difference of the definition. What are these two words meaning? इन दोनों words के meaning क्या हैं? Then I will show you where are they used in these verses. Okay? Dokimozo या dokimos means testing with the purpose of approval. किसी चीज की परीक्षा लेना उस चीज को क्या करने के लिए? जांचना तो ठीक है ना. अप्रूवल अप्रूव करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए नहीं, उस चीज को सही घोषित करने के लिए, उस चीज की, लाइक फॉर एग्जांपल यू गो टू अ सुनार की दुकान, सिद्ध करने के लिए, उसको सिद्ध घोषित करने के लिए. ओके, नहीं फॉर एग्जांपल इन माय कंपनी, हमारे कंपनी में वी मेक कंक्रीट. ओके, एंड आई एम इन द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. हम कंक्रीट बनाते हैं. नाउ जब हम कस्टमर के पास कंक्रीट भेजते हैं तो वी मेक क्यूब्स ऑफ दैट कंक्रीट.
Why do we make cubes? We put it under the machine and the load is applied. उस मशीन में रखते हैं, tons and tons of load is applied. Sometimes 200-250 ton load apply करते हैं to break the cube. Why do I want to break the cube? Test it and basically prove that it has the strength which I wanted. ये साबित करने के लिए कि उसके अंदर वो ताकत है जिस ताकत के लिए मैंने उसको डिजाइन किया है. What did God do with Job? He put him in. परमेश्वर ने अय्यूब को क्या किया? उसको टेस्टिंग मशीन में डाल दिया. In the whole book of Job, you see a laboratory, concrete laboratory, God's concrete laboratory. परमेश्वर की वो है lab, right? And Job test हो रहा है. So but Dokimozo is never to make a decision regarding whether this object is good or bad. डॉकीमोजो शब्द कभी भी इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता कि मुझे चीज को एक्चुअली जांचना है कि वो सही है गलत. द वर्ड इज नॉट हैविंग अ नेगेटिव कनोटेशन, द वर्ड हैज अ पॉजिटिव कनोटेशन. ओके, इस शब्द में क्या है? सकारात्मक प्रक्रिया है. ये साबित करने के लिए कि वो चीज अच्छी है, डॉकीमोजो शब्द इस्तेमाल किया. नो पीरियाजो. पीरियाजो इज अ वर्ड. This is a जांचना word. Test. The result of periazo can be I found it good, I found it bad. Periazo word will be used in Greek language कि जब वो चीज मैं जांच रहा हूं, it can be I am not sure whether it is good or bad, so I am testing it. Okay? Dokimazo में I know it is good. That's why I am testing it. I want to prove that it is. Okay? इसलिए you got the difference? No. Validate. Okay. Now that is also called test. Right? Like people do annual medical checkup these days, knowing that they are healthy. They just want a validation. कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ. So now look at this. Dokimazo. I will give you some quick verses to show you how Dokimazo. Now first, Luke 14:19 is a good example of Dokimazo. लूका का 14:19 कौन पढ़ेगा? Luke 14:19. It says, and another one said, I have bought 5 yoke of oxen and I am going to try them out. Please consider me excused. This guy is giving an excuse. He says, I just bought 5 oxen. And what do I want to do? I want to dokimazo them. And what is there to dokimazo? Like Hindi में, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए, मैं उन्हें परखने जा रहा हूँ. अब बैल को क्या परखोगे? आपने खरीद लिया अब already, right? You already bought them. There's no point testing them now. But what you are doing, I am going to test. Like try them out. Like trial room in Orbit Mall. What is the trial room? Like of course trial room in Orbit Mall still has both the sides, right? Like suppose you bought the dress and now you go to home. Ladies love doing it anyway, right? कि आप कपड़े खरीद के लाए हो, and then घर में जाके you are saying I am trying it out. What is this trying out? You have already bought it, right? अब आप ये ट्राई नहीं कर रहे हो, आप परख नहीं कर रहे हो. You are just proving that it looks good on you, right? You want to feel happy about it. So, yeah, today's test was Dokimazo. आज का quiz was Dokimazo quiz, right? We were just proving that you are between 7 to 10. Okay. Now let's look at the other word, perirazo. Pirazo. John 6:6. Yohana 6:6. This, now remember Philip came to Jesus. Philip यीशु के पास आया. Everybody is hungry. सब लोग भूखे हैं. This is the miracle of multiplication of bread and fish. Okay? मछली और रोटी यीशु मसीह ने मल्टीप्लाई की. और उसके पहले
एंड यीशु ने कहा, हे ब्रिंग द ब्रेड सो दैट पीपल कैन ईट, रोटी लाओ, लोगों को खाना खिलाना है। हमारे घर में रोटी, राइट? What did God have? Verse 6 says, this he was saying to test him, for he himself knew what he was intending to do. यह उसने उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह स्वयं जानता था कि मैं क्या करूंगा. Now this is the word pirazo. Jesus is talking to Philip, how Philip will respond, whether he will have the right answer. Pirazo. And Philip did not have the right answer. Let me Revelation 2:2, प्रकाशित वाक्य 2:2. You remember who is this church? Ephesus. And what does it say? You have tested the false teachers. What? तुमने गलत शिक्षकों को जांचा है और उन्हें गलत पाया है. That is pirazo. So the outcome of pirazo can be positive or negative. Like you do a test, आप जांच रहे हो, but जांचने का परिणाम wrong and right दोनों हो सकता है. You have tested and you have found them false. Okay? Then what else is there? मैं आपको कुछ definitions दे देता हूँ between these two words and then we'll go. Now, pirazo also includes solicitation. Pirazo का जब आप मीनिंग देखेंगे, solicitation means temptation, like luring. Dokimazo does not. Dokimazo में ललचाना नहीं है, but pirazo में ललचाना है. God does not tempt anybody. What is the word? pirazo. परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, उसका मीनिंग ये नहीं है. क्या है? परमेश्वर किसी को pirazo नहीं करता. That means God will not lure somebody. God will not solicit somebody towards sin. That is what it means. दोनों को यदि आप हिंदी ट्रांसलेशन देखें, God does not test anybody. God does not tempt anybody. Tempt and testing में तो फिर भी थोड़ा सा फर्क है, बट हिंदी में दोनों परखना है. So what does that mean? Solicitation. For pirazo involves solicitation. Now look at this. 1 Corinthians 3:13. 1 Corinthians 3:13. पहला कुरिन्थियों का 3:13. Every man's works will be tested by fire. We must see judgment, right? हर व्यक्ति का काम आग से परखा जाएगा. What is the word? Pirazo. Again, the work will be tested. Work will be tested, and it can turn out to be good or bad. It's not two different kind of test. I'm saying these are two words. When it is used in certain sentence, you have to figure out what is the sentence saying based on the meaning. Yes. Pirazo can be used for bima seat. You can use dokimazo as well as pirazo based on what sentence you are saying. You have to look at the sentence. Okay. So 1 Corinthians pirazo. Now, okay, 1 Corinthians 11:28. 1 Corinthians 11:28. पहला कुरिन्थियों का 11:28. Do you know what it says? What is 1 Corinthians 11 about? पहला कुरिन्थियों 11 में क्या है? Anybody? प्रभु भोज, Lord's Supper. And what does it say? No man should take unworthily of it. अयोग्य तरीके से किसी को नहीं लेना चाहिए. And every man should test himself, examine himself. Now what is that examination about? वो परखना क्या है? वो जांच क्या है? That's dokimazo. That's dokimazo. Basically,
in that you are not approving or rejecting yourself. Do you go like anybody? Do we advise in the church? Okay, sit there today and do a test. If you are not good today, then don't come for Lord's Supper. Is that intended in that? Like आज आप प्रभु भोज मत खाना है, यदि आप अपने आप को जांच में गलत पाओ तो. That's not the intention. You have to. What kind of test is that? You have to just go. Holy Spirit shows you something wrong in your life. You go before God, confess your sins, be cleansed, and come for the Lord's Supper. Right? That's how it is. Like प्रभु भोज में क्या है? यदि आपको पवित्र आत्मा ने कुछ गलती दिखाया, तो you have to basically come to a point of approval. In Lord's Supper, in 1 Corinthians 11:28, you don't have to judge yourself. आपको अपने आप का न्याय नहीं करना है. आपको क्या करना है? आपको अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा अप्रूव करना है. How do you approve yourself? You go before God, say, प्रभु आओ मुझे याद दिलाओ, if there is something in my life, कुछ ऐसा है जो मेरे और आपके बीच में है, right? So पवित्र आत्मा याद दिलाता है, and you say, blood of Christ cleanses me from all sins. यीशु मसीह का लहू मुझे सब अधर्मों से शुद्ध करता है, and then you go and take your blood supper, right? So that's dokimazo. But then 2 Corinthians 13:5, 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों का 13:5, there same word says examine yourself, but this time it says pirazo yourself. Examine, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं. Examine yourself whether you are of faith or not, and there the word is what? Pirazo. Why? क्यों है pirazo? Because some people may be in the church and they have not yet received Christ in their life, and they must examine themselves whether they are really believers or not. Okay, this test can result into positive or as well as negative. इस परखने का परिणाम दोनों साइड में हो सकता है. So now when Hebrews 3:9, let's go there. What does it say? Your fathers tested me in the wilderness. तुम्हारे पुरखों ने, गॉड बोल रहा है, तुम्हारे पुरखों ने, यहूदियों ने विल्डरनेस में मेरी परीक्षा ली. They tempted me. What is he saying? अच्छा, they proved God. They were pirazoing God. How do you put the Lord on the test? You are doubtful whether Lord is good or bad. When you are testing somebody by pirazo, what are you doing? जब आप pirazo के द्वारा किसी की परीक्षा ले रहे हो, तो what you are, Old Testament people, what were they doing in the wilderness? They were not sure whether God is good to them. वो लोग इस बात से वो पक्के नहीं थे कि प्रभु उनका भला है या बुरा है. They were not sure कि प्रभु ने वादा, हे हमें इजिप्ट से लेके आ गए, मोसेस तुमने हमको इजिप्ट से लेके आ गए, वहां कम से कम प्याज खाते थे. Yes, they said we had onions in the Egypt. लहसुन इसलिए वो आती थी. Wow. So they were testing God. Hebrews 3:9, what is the meaning? They did not believe God. They did not trust Him. So they were testing God. वो परमेश्वर की परीक्षा ले रहे. Now come to, if any, James 1:14, याकूब 1:14. If anybody is tempted, he should not say God tempts him. यदि कोई परखा जाता तो ये ना कहे लालसा से गुजरता है. Because this is what? If somebody goes through pirazo, he should not say God pirazos him. Because God does not solicit anybody with a sin. जब कोई लालसा से गुजरे, like let's say किसी का शराब पीने का मन कर रहा हो और बोले ये वीकनेस तो मुझे गॉड ने दी है क्योंकि मैं शराबी डिजाइन हुआ हूँ, I am designed a drunkard. If somebody says that, then what is he saying? God is saying no. God does not pirazo anybody. God does dokimazo.
एंड देन जेम्स 1:2 में जब कहता है व्हेन यू गो थ्रू डॉकिमाजो, व्हेन यू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ टेस्ट व्हिच हैज कम देयर इन योर लाइफ टू अप्रूव यू, जब आप परीक्षा से गुजरते हो, जो परीक्षा आपको इस दुनिया में यह साबित करने आई है कि यू आर गॉड्स चाइल्ड, यू आर वर्दी ऑफ अ किंगडम, आप एक राज्य के हकदार हो, देन रिजॉइस, तब आनंदित हो। दैट इज व्हाट, बिकॉज ये परीक्षा आपकी लाइफ में आई इसलिए है कि आपको साबित कर सके कि यू आर अमेजिंग इन द प्लान ऑफ गॉड, आप परमेश्वर की योजना में अद्भुत हो। सो यू शुड बी हैप्पी, दैट्स डॉकिमाजो। लास्ट वन, cast away. That's what? A dokimos. What is a dokimos? Dokim means approved after testing. And a लगा दिया तो in the Greek language if you put a before a word, not. A means not. So a dokimos would mean tested but not approved. Tested but not. So Paul is saying, now look at that. Disqualified can also be said. पौलुस क्या कहता है, यदि मैं अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार नहीं करूंगा और रेस को मैं अनुशासन से नहीं दौड़ूंगा, तो आई कैन बी व्हाट, अ डॉकिमोस, दैट मींस आई कैन बी डिसअप्रूव्ड, नॉट थ्रोन अवे। तो कास्ट अवे का गुड ट्रांसलेशन विल बी डिसअप्रूव्ड। गॉड टेस्टेड मी, गॉड पुट मी, परमेश्वर ने मुझे दौड़ में दिया, लड़ाई में के बीच में रख दिया, आई my balloon blasted off, right? So but Paul says I don't want to be a castaway, I don't want to be a dokimos, I know I'm being tested, मुझे पता है मेरी परीक्षा चल रही है, एंड मेरी परीक्षा इसलिए हो रही है कि परमेश्वर मुझे अप्रूव करना चाहता है, एंड मैं सारी ताकत लगा के दौड़ना चाहता हूं जिससे मैं डिसअप्रूव ना हूं। अप्रूवल नॉट इन द सेंस ऑफ परमिशन टू कम टू हेवन, disapproval in the sense of being honored, right? Like आदर के योग्य होने और इनाम के योग्य होने में से मैं disapprove नहीं होना चाहता। Okay, so this dislocated sentence is a small lesson. I have already taught it, so we will do it next time. So we will go back to lesson number 16, like in the current syllabus, because I missed it today. So be ready for that. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी इन अद्भुत सच्चाइयों के लिए जो हम सीख रहे हैं आपके वचन के द्वारा। आप अद्भुत परमेश्वर हो, धन्यवाद। हम एक बार फिर से रिट्रेट करना चाहते हैं, व्हेन समवन इज टेम्प्टेड लेट हिम नॉट से दैट गॉड इज टेम्पटिंग हिम। यदि कोई लालसा से गुजरे तो वो ये ना कहे कि परमेश्वर उसे लालसा से गुजारता है, बल्कि जब हम परीक्षा से गुजरते हैं तो हम आनंदित होते हैं। वी रिजॉइस व्हेन वी are tested, because this testing has come to approve us. Thank you, Lord, for being a God like that. Thank you for being a Father like that. In Jesus' name we pray. Amen.